Very warm good evening to all my viewers. And today I'm indeed very honored, excited, and privileged to have a guest, a fighter who is none less than the current world championship, the Gamma World Championship. For all those who might not know, Gamma stands for Global Association of Mixed Martial Arts. It's a very prestigious world championship. And my guest, Surbala Laishram, is a gold medalist there. Thank you so much, Surbala, for coming in. Thank you so much. I know you were in the training. You just come back. You made your own food, and then you had your lunch and all, and then you're here in training. So thank you so much, Surbala, for coming in. Thank you so much. Thank you so much, Kankan, for taking a video. So yeah, thank you so much. Yeah, thanks, Surbala. I mean, honestly. Of course, we all know. I mean, I know that you are a world championship at the recently held Gamma World Championship at Amsterdam in the Netherlands. But apart from that, you also had other laurels that you brought for yourself and for your country, and that's why I asked for your profile, right? Because I didn't know about your other laurels. And when you gave me the profile, I saw some 23 line items, wherein you almost, wherein you won gold medals in almost all those categories as well. Of course, I cannot read out all those 23 items here. I'm so sorry because of the time constraint. But you, apart from your World Championship gold, you also have been the gold medalist at the WAKO, that is the World Association of Kickboxing Organization, and also you have been a BJJ Asian champion, right? Yes. So I mean, right from your sub junior days until now, it's been a long fighting journey. Thank you so much for everything. Being a fighter, which is often a lone sport, is not a easy thing, and you have sacrificed so much, staying away from your family, and training, and then bringing all these laurels for yourself and for us. It's really a great journey. But before all that, before going deep into your journey as a fighter, I'd really like to ask you, what is this thing about Manipur? Yeah, I mean, Manipur as a state, it has a very small population compared to most of the states here in the country. But we have, I mean, Manipur has produced some of the best, athletes, best fighters for the country. Right from those days, I still remember Thoiba Singh, who still happens to be one of my favorite hockey player. He was a left winger, Thoiba Singh, because of speed, stamina, dribbling skill. He always used to be, a great forward for Indian hockey, so to say. And then we had somebody like Kunjarani Devi in weightlifting. Yeah, weightlifting. Then some of the best boxers, Sarita Devi, Dinko Singh, and Mary Com. I mean, we all know Mary Com. I mean, these boxers are world champions, world class athletes. Then somebody, even in archery, for example, we have had Bombaila Devi Laishram. Then now, of course, Mirabai Chanu, the great Mirabai Chanu, the silver medalist in the Olympics in weightlifting. I'm so sorry. I think I've lost about 10, 15 other great, athletes from Manipur because of the time constraint, because, the list will go on. So what is this thing about Manipur? I mean, of course, now we have fighters like you, up and coming fighters like you, who is again representing the country, making us all proud. And here I'm talking about world-class athletes, world champions. So what is this thing about Manipur? I mean, is it to do with something to do with the sporting culture of Manipur, or ऐसा भी है क्या कि मतलब you all would have come out of more hardship compared to other people? तो ये क्या है मणिपुर में, क्या है ऐसा जो बाकी में मतलब we are still trying to catch up with Manipur, states like Manipur in terms of sports? Yeah, there's very interesting question actually, Yeah. Kankan. Like Yeah. actually क्या होता है, even me also, like मणिपुर में हम लोग बहुत छोटा सा स्टेट है, but हमारा वहाँ से बहुत सक्सेसफुल एथलीट निकलते हैं, क्योंकि फॉर माय ओपिनियन, आई मीन बाकी लोग अलग अलग रहता है, बट फॉर माय ओपिनियन लाइक हम लोग बहुत पोर स्टेट है, लाइक बाकी कंट्री की तरह, बाकी स्टेट की तरह हम लोग फैमिली इतना एफर्ट नहीं कर सकते हम लोग, like our family is like but very low background actually, और मम्मी हम लोग के सामने मम्मी पापा फैमिली उसके पास इतना देने का मन तो था, बट इतना ही भी नहीं था, बट हम लोग उतना थोड़ा थोड़ा किया था हम लोग। आई मीन वो मम्मी पापा के एफर्ट देख के हम लोग को क्या क्या लगता है अंदर से, मम्मी को हम लोग इतना कर रहे हैं,
सो वो लोग का देख के मुझे को टाइम वेस्ट करने का मन नहीं आता एक्चुअली, लाइक यू नो हम लोग कुछ ना कुछ करके, हम लोग बड़ा अचीवमेंट करके, हम लोग गोल सक्सेसफुल होके हम लोग फैमिली का कुछ हेल्प कर सको, ऐसा सब सोच के हम लोग क्या होता है ये फैमिली का प्रॉब्लम देख के हम लोग टाइम वेस्ट करने का मन नहीं था एक्चुअली। अच्छा सो हम लोग कुछ कुछ ना करो, लाइक इवन गेम या एवरी बैकग्राउंड वगैरह वगैरह लोग कुछ इसमें करते एकदम हमारा मन लगा के जान लगा के विल डू और डाई ऐसा करके हम लोग मेहनत करते हैं ऐसा, लाइक या इसलिए ट्रू सक्सेसफुल ट्रू हो ट्रू जाते हैं। या ऑब्वियसली मतलब बिकॉज आप लोग वो बैकग्राउंड से हो जिसमें हार्डशिप है, सो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर ए नेक्स्ट लेवल, है ना? मतलब आप लोग इतना यस हार्डशिप से गुजरते हो, तो आप लोगों को मतलब वो जहन में है कि कुछ करना है, कुछ ज्यादा कुछ मतलब मेहनत करना है तभी कुछ होगा। वो मतलब इट्स ऑल अबाउट दैट हार्डशिप दैट यू गो थ्रू, इसलिए मतलब ज्यादा ये है ना? यस यस ट्रू या True. Now, talking about your World Championship gold medal in the final यस bout, you had Kazakhstan opponent, right? Tomiris. यस Uh, या हाँ, या या जिनको आपने हराया, तो वो बाउट के बारे में थोड़ा बताओ आप, मतलब was it played more on the ground, मतलब kickbox, because you are a kickboxing and also BJJ specialist, was it played more on the ground or stand up game ज़्यादा हुआ? Was it a striking match or it was played on the ground? कैसा हुआ, मतलब how did they approach the match and the bout, and what actually happened in the bout? yeah actually that my final match was happening almost I was fighting with ground game, not ground game, sorry, yeah, striking actually. Because मेरा first bout पे that was very, हम दोनों का weight बहुत काफी different हो चुका था actually। ककन मेरा weight actually मैं यहाँ से गया था, मैं नीदरलैंड 47.6 खेलने के लिए, Okay. so I was एटोमिक डिवीजन, बट वहाँ पे मेरा एमएमए स्ट्राइकिंग का हमारा मेरा वेट पे वो एथलीट नहीं था, इसकी वजह से वो लोग मुझे को बोल रहे हैं हम आपको वेट एक ऊपर केजी जंप करना पड़ेगा, नहीं तो आप एक एमएमए में खेलने के लिए। बट मैंने सोचा वहाँ पे हमारा इंडियन का भी एक ऑलरेडी कॉम्पिटिटर हो चुका है, सरिता राठौर, शी वाज माय फ्रेंड एक्चुअली। सो उनकी है था, लेकिन मुझे को सेम वे भी मुझे उनकी जाने का मन नहीं था एक्चुअली। क्या होता है हम लोग बड़ी मुश्किल से हम वालसी में जा रहा था, सो वालसी में जाके हम दोनों वहां से कॉम्पीट करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है। सो आई जस्ट मैंने बहुत ध्यान सोचा, ऐसा लगा मैं मेरा कोच से डिस्कस किया है, मेरा हमारा इंडियन प्रेसिडेंट आदित्य सर, हम लोग डिस्कस करके मैंने डिसाइड कर लिया था, मैंने रिस्क किया था एक और जंप करके खेलने के लिए। सो मैं 52 में खेला मैंने, बट सो मेरा फर्स्ट फाइट में उसका मैं स्टार्टिंग होती फाइट लाइक 20 ऑलमोस्ट 20 सेकेंड जस्ट फाइट होते, सो मेरा मैं गिर गया था एक्चुअली उसका पंच से एक्चुअली। शी वाज Okay. वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल Yeah, वेरी okay. स्ट्रॉन्ग, Yeah. तो लाइक उसका नी से मेरा यहाँ पे लीगल नी लग गया था मेरा। सो दैट टाइम मेरा ये एकदम मेरा माउथ शिफ्ट हो गया था, एकदम मेरा जो नीचे आ रहा था। सो लाइक यू नो उसके बाद मैं सोचा मैं फाइट कर पाएगा नहीं कि मुझे समझ नहीं आता, मुझे को एकदम यहाँ से एकदम बुन ऐसा आ रहा था। और मुझे को मैंने डॉक्टर को बताया नहीं एक्चुअली वहां का, क्योंकि दे विल स्टॉप ना, दे कैन स्टॉप ना हाँ, बिकॉज वो दैट वाज डॉक्टर वेरी स्टॉपेज हो डेंजर। जाएगा ना, हाँ डॉक्टर स्टॉपेज हो जाएगा तो फिर ना। या मुझे को कुछ ना कुछ करके मुझे गोल जीतना है, मुझे को ये वाला कभी मौका नहीं छोड़ूंगा। मुझे को बहुत मैंने कंट्रोल कर लिया, बहुत टाइट किया, और मैंने सोचा था मैं क्लोज रेंज में फाइट नहीं करूंगा, मैं क्लोज रेंज में फाइट करना शुरू करेगा तो कम से कम एक दो पंच लगेगा तो और चांस खराब होने के चांसेस था। सो मैंने सोचा था मेरा फाइट या अच्छा हो या खराब हो मुझे डजंट मैटर, सो आई विल बी विन दिस मैच। सो मैंने मेरा फेस को थोड़ा सा साइड में छिपा छिपा के मैंने स्ट्राइकिंग में से धीरे 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 खेलना। सो मैं अटेम्प्ट किया था उसको टेक डाउन करने का, बट शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसको बहुत थोड़ा एक्सप्लोसिव तो नहीं था एक्चुअली, बट उसका बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग था। या मैं थोड़ा स्ट्राइकिंग ऐसा आराम से डिस्टेंस बना के मैंने स्ट्राइकिंग कर करके मैं गोल मिला। वाओ, दैट्स आई मीन ग्रेट विन है, मतलब आपका जॉ शिफ्ट हो गया एंड आपको मालूम था डॉक्टर को बोलेंगे तो डॉक्टर स्टॉपेज हो जाएगा, बोला कि नहीं यू कांट कंटिन्यू। हाँ, तो इसने अपने या डॉक्टर को नहीं एक्चुअली बता हाँ। अभी कैसा है, ये अभी अभी तो मतलब कुछ तो वहां पे वो मैं वहां तुरंत फाइट के बाद मुझे मेडल 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 होने के बाद हम हॉस्पिटल गया था वहां हाँ पे, और सीटी स्कैन लिया था हमारा, मेरा ये जाइगोमेटिक बोन 3 फ्रैक्चर हुआ था और थ्री जो फ्रैक्चर्स, माय डिसलोकेट। गॉड, या डिसलोकेट हो गया था।
हाँ और वापस आया I तो mean, दिल्ली of से course, we all know you as the Princess Warrior, right? You really fought like a warrior. Seriously, I mean, हाँ you deserved that name. Yeah. No, seriously, I थैंक mean, यू you're a real fighter. तो वही मतलब क्योंकि आप you knew कि और एक पंच लग जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. So you also या maintain फर्स्ट distance, ना मतलब आप distance maintain करके फाइट कर रहे थे, and then you try to प्रॉब्लम take her down, right? Great fighter. it's always down like you हाँ. know मेरा ये सिर्फ हो गया था ये हाँ हाँ. दांत टंग के बीच में आ गया था वाह. ऐसा करके एकदम गिर गया था so I just tied very tightly हाँ yeah वो मतलब नी लग गया था ना, लीगल नी यहाँ पे. yeah इलीगल नहीं लगे हाँ बिल्कुल हाँ. नहीं किया बाप रे. उसके बाद जो इमोशन हम लोग देखा, वो पूरा नेशनल फ्लैग लेके आप आपके कॉर्नर के पास गया था, शायद आपके टीममेट्स के पास गया था, एंड देन यू स्टार्टेड क्राइंग आल्सो, आई थिंक, राइट? right और उसके बाद पोडियम के ऊपर जब अपना नेशनल एंथम लग गया था, देन यू स्टार्टेड क्राइंग. इट वाज सच अ ग्रेट मोमेंट यार. मुझे तो गूज़बम्प लग गूज़बम्प आ गया था. Seriously, I mean, these are the stories, right? We all want to hear. I mean, from the brink of loss, आपने पूरा मतलब टेबल टर्न करके उनको हराया, एंड देन ये मैच जीत के आया हम लोगों के लिए खुद के लिए. वाह, ग्रेट ग्रेट. तो वही मैं एक्चुअली, हाँ, और एक चीज है. अभी जैसे कि सी लेट्स एक्सेप्ट इट, अभी इंडिया में हो या कहीं और पे भी हो, फैमिली, यू नो, व्हेन इट कम्स टू फैमिली सपोर्ट, स्पेशली इन कॉम्बैट स्पोर्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि आपका जैसे कि आप जॉ डिसलोकेट का बात कर लिया, एंड यू आर अ फीमेल फाइटर, वी आर ऑल yes a little bit more emotional for our daughters, है ना, for the girl child. तो आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रही? बिकॉज you're not fighting a non combat sport, you're fighting a combat sport जिसमें yeah भी कुछ भी हो सकता है, मतलब ब्रूजेस आ सकता है, स्कार्स आ सकते हैं. Let's accept it. So, how was the family support? Because Mary Kom also had a great story to say कि उन्होंने कैसे fight किया. yeah There were a few, obviously, of course, he had he had a great supporting husband, but at the same time, there were also a lot of other family members who thought, oh, she's a girl, should she really fight? चुप के fight किया. तो आपका support system कैसा था to take up a sport like MMA, जिसमें कुछ भी हो सकता है, yes actually मेरा तो लकी है मेरा फादर मदर एंड होल फैमिली बहुत सपोर्ट करते मेरा लिए लाइक बहुत सपोर्ट करते स्टार्टिंग में तो मेरा मोम थोड़ा सा पसंद नहीं था गेम एक्चुअली वो मम्मी चाहता था लाइक मैंने गेम स्टार्ट करेगा तो मेरा स्टडी में बहुत ज्यादा नीचे पीछे हो जाएगा इसलिए और बट मैं हमेशा मैनेज करके आता हूँ लाइक मेंटेन करके मैंने क्लास 10 एग्जाम देने की टाइम में थोड़ा गेम स्टॉप किया लाइक आफ्टर क्लास 12 एग्जाम के टाइम में थोड़ा गेम स्टॉप किया एंड मम्मा को चाहते हैं कि मास्टर खत्म हो जाओ और उसके बाद ग्रेजुएशन ठीक तरह स्टडी चाहिए मम्मा को बट मैंने मम्मी को बोला था ऑलरेडी मम्मी मैं ग्रेजुएशन तक मैं कर लूंगा उसके बाद मुझे प्लीज मुझे को गेम में फोकस करना है मुझे मम्मी को बोला मैंने मम्मी को प्रॉमिस किया था मम्मी ओनली फॉर मैं ग्रेजुएशन तक मैं एफर्ट कर पाऊंगा उसके बाद मैं और करने का मन नहीं मुझे और मैंने बोला था इतना ही मुझे को स्टडी करने में पैसा पैसा देने वाला था मेरा को हेल्प करो मुझे को स्पोर्ट्स में मैं और अच्छा सा मेहनत करके मैं बहुत नाम कमाऊंगा और जल्दी से जल्दी चैंपियन बन के आऊंगा आपको बहुत प्राउड फील होने दूंगा ऐसे करके मैं मम्मा को प्रॉमिस किया था बट मम्मा पापा भी उसके बाद मुझे को सपोर्ट किया और पापा तो ऑल द टाइम सपोर्टिंग मी लाइक लाइक मैं या इस वर्ल्ड चैंपियनशिप जाने से पहले में एक मेरा नी सर्जरी हुआ था उस टाइम को पापा बहुत बढ़िया पापा बोलता मुझे को हमेशा हम लोग मैं एक घर था हमारा विंटर था वहां पे हम लोग फैमिली हॉल करके हम लोग बोनफायर करते ऐसे करके और लास्ट एक रात पापा मुझे को बता रहा था लाइक पापा ऑलमोस्ट क्राई ही वाज लाइक मुझे को विनिंग लूजिंग डजंट मैटर मुझे को आप एक बार रिंग पे जाके तुमको फाइट करना एक बार देखनी पापा ऐसा बोला था मुझे को अंदर से बहुत रोने की फील आया था सो मैंने सोचा था मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा मेरा नी इंजरी बहुत डेंजर था गन लाइक ACL MCL meniscus totally tear था सो आई वाज रिकंस्ट्रक्शन माय नी मेरा बेंडिंग में नहीं हो पा रहा था और टोटली 7 मंथ हुआ था मेरा नी हिल को हिप तक आने के लिए सो आई वाज मैं बहुत गिफ्ट लिया था मैंने और 20 में मैं ठीक करके आया था आफ्टर 1 ईयर के बाद फिर से सेम नी पे फिर से MCL में री इंजरी हुआ था फिर से सो मेरा लिए बहुत टफ टाइम था यार
बट इंजरी की बाकी टाइम सब फैमिली सपोर्ट है, बट आफ्टर इंजरी के बाद मेरा मम्मा थोड़ा मुझे को गेम स्टॉप करने का ट्राई किया था, लाइक वापस आ जाओ तुम दोबारा गेम करेगा तो और अच्छा भी और डैमेज होने का चांसेस है, सो प्लीज स्टॉप द गेम एंड डू समथिंग व्हाटएवर यू वांट, ऐसा लाइक बताना शुरू किया था। बट मुझे को घर भी जाने का मन नहीं था एक्चुअली। मैं बेंगलोर में रहता था, मैं लॉकडाउन की टाइम में बहुत, क्योंकि मैंने सोचा था मैं एक बार मैं घर गया तो मुझे को मम्मा को दोबारा वापस नहीं भेजेगा बेंगलोर, सो मुझे को इतना प्रॉब्लम हो तो मैं आई विल मैनेज माई सेल्फ, ऐसा करके मैंने कंट्रोल करके मैं यहाँ पे रुका मैंने। और उसके बाद वो फिर से वर्ल्ड चैंपियन जाने के टाइम ऐसा करके मैं वर्ल्ड चैंपियन गया और सर्जरी की फिर से सर्जरी हुआ था, बट मम्मा वाज नॉट हैप्पी, बट इट्स ओके फाइन, लाइक नाउ शी इज फाइन, या शी इज सपोर्टिंग मी ऑलवेज, या Great story. Yeah. थैंक Now talking about, I mean, you are one of those new generation fighters from India, जो घर छोड़ के बाहर ट्रेनिंग करके, because see, it's an individual sport. Of course, you've got your own sparring partners, trainers hai, अच्छे coaches hai. When you go to the gym, there are so many people. But at the end of the day, you are a lone fighter inside the cage, है ना? And you're coming out of your own hometown in Manipur, then you're staying here in Bangalore, taking care of everything about yourself. Not only training, you're doing everything, right? From your cooking to your washing of clothes, to your maintaining everything, उसके बाद tournaments खेलना है, अपने आप को सपोर्ट देना है। टूर्नामेंट में कुछ भी हो सकता है, हारना जीतना, ड्यूरिंग बैड डेज आल्सो यू नीड टू सपोर्ट योरसेल्फ। ऑफ कोर्स यू गॉट योर ओन स्पारिंग, वेरी गुड स्पारिंग पार्टनर्स, ट्रेनर्स, वो लोग तो है ही, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर, इट्स अ कॉम्बैट स्पोर्ट वेयर इन इट्स नॉट टीम स्पोर्ट, राइट? व्हेन इट कम्स टू द केज, तो how is it managing, all these things, coming out of your hometown, managing yourself? Like I said, now we've got a lot of Indian fighters who are doing this, new generation Indian fighters. पहले क्या था, मामा पापा के मतलब घर पे रह के फाइट करना, लेकिन अभी हम लोग देख रहे घर छोड़ के खुद अपने आप को संभाल के ट्रेनिंग करके मेडल जीत के या जो भी है. So how is it managing all these things alone? Because a lot goes into that, right? And in combat sport, it's not only about, you're not only doing kickboxing or BJJ, it's a MMA wherein you are training different levels, right? From BJJ to your kickboxing to your wrestling, grappling, जो भी है, तो इतना कुछ कैसे आप मैनेज कर रहे हो? एक्चुअली ये सब पहले हम लोग खुद के ऊपर हम कॉन्फिडेंस चाहिए ऑलरेडी, पहले हमारा हम खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग कुछ ना कुछ हमको कुछ चाहिए, कुछ सक्सेसफुल होना चाहिए, तो कुछ कई चीजों हम लोग सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लाइक आई ऑलवेज थिंक लाइक मैं हमेशा में ऐसे सोच के मैंने आया था जहाँ पे मैं बचपन से मैं बहुत गेम का बहुत शौक था। मुझे को गेम पे मेरा कुछ हिस्ट्री बनानी है, मेरा बचपन का मेरा ड्रीम था ये ऐसे लाइक। और मैंने मणिपुर में हम लोग में कई साल किक बॉक्सिंग किया। उसके बाद मुझे एमएमए बहुत इंटरेस्टेड आने लग गया था एमएमए पे। सो मैंने एमएमए को मणिपुर में थोड़ा सा स्टार्ट किया था, बट हमारा वहाँ पे मणिपुर में बीजेजे का कोच नहीं था, और एमएमए के लिए थोड़ा दिस इज मल्टीपल टाइप ऑफ मार्शल आर्ट्स ना। सो स्ट्राइकिंग का, रेसलिंग का सब कुछ है, बट बीजेजे का नहीं, इसलिए थोड़ा ग्राउंड में आने के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते। सो मैंने हमारा फैमिली को डिस्कस किया, और वन ऑफ माय ब्रदर रोशन मीना, वो हम लोग ऐसा बातचीत किया। उसके बाद मैं हमारा कोच विशाल साइकिल उससे बात करके मैं यहाँ पे बेंगलोर पे शिफ्ट किया था ऐसा करके। और ये सब पहले स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट कोच के फैमिली ने भी हेल्प किया, और ये हमारा टीम का भी बहुत मैटर करती है। हमारा एक अच्छा सा फ्यूचर जनरेशन को मैं बताना चाहता हूँ, अच्छा सा एक टीम चूज कर लो आप। अच्छा सा टीम चूज कर लेगा तो नॉट ओनली फॉर ट्रेनिंग, आपका फिजिकली मेंटली बहुत सपोर्ट करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सो उसके बाद क्या करता है, मैं अकेले शिफ्ट किया था। सो अभी मैं हमारा महीने का एवरी मंथ का एक्सपेंसेस वगैरह में घर पे डिपेंड नहीं करते मैं। लाइक आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन माय फैमिली बिकॉज my father already retired, so only like we have 3 brother and sister, so सब लोग सोता सोता है हम लोग। बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग पापा मामा को कोई हेल्प नहीं कर सकते, लाइक सो ऑलरेडी पापा मम्मा बहुत हेल्प किया हम लोग का, अभी हम लोग हेल्प करने के टाइम आ गया, बट वी कांट हेल्प एनीथिंग। बट सो मुझे को सोचा था मुझे को आई डोंट वांट टू टेक
सो वो लोग भी थोड़ा अच्छे से रहना चाहता हूँ मैं। सो मैं यहाँ पे मैं मॉर्निंग इतना मैं पीटी कर सकता हूँ। मॉर्निंग में मैंने पीटी लिया और इवनिंग में पीटी लिया, उसके थोड़ा वो लोग पैसा मिलते, उससे लेके मेरा रेंट वगैरह और मेरा एक्सपेंसेस, मेरा फूड वगैरह में ऐसा मैनेज करके, या थोड़ा टफ है। बट या अभी तो धीरे धीरे आदत लग गया, so now I can manage. Yeah, everything is up to our mind actually. Mind, right? Yeah, yeah. True, true. No, Yes, seriously, it's such a mental game, not only physical game. I mean, even for everything, right? Not only as a fighter, everything. It's so much here between the yes, years. Yeah, yeah. जैसे कि आपने बताया already, MMA is mixed martial arts, right? It's not only about yeah. kickboxing, not only about BJJ. So Mm. how is that now? You are both a kickboxer and a BJJ specialist. आप दोनों दोनों अच्छे हो. But when you approach a say a bout, when you don't know too much about your opponent, of course, आप जब bout approach करते हो, if you know a little bit about your opponent, you will maybe go with a mentality कि इसमें ज़्यादा striking करना है या ज़्यादा ground में खेलना है. But if you don't know too much of your opponent, which is yours? I mean, it's a now because you're both good in both BJJ and kickboxing, आप कौन सा ज़्यादा यूज करोगे, in terms of your specialty? क्योंकि आप दोनों में अच्छे हो, तो कौन सा मतलब if I have to choose between 100%, आप which do you think will help you more in a bout than the other? Yeah, yeah, this is true. Good, actually, good question. हमेशा मैं कंकन में ऐसा करता हूँ, मैं एक फाइट है, मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ मैं, लाइक मैं एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड किक बॉक्सिंग था, बट मैं रेसलिंग बीजेजे में कभी स्ट्राइकिंग से कम कभी ट्रेन नहीं किया मैंने। वो मैंने पहले बचपन से क्या क्या सोचा था मैंने, मेरा ऑलरेडी मेरा पास स्ट्राइकर, मेरा पास थोड़ा नॉलेज है, बट मेरा पास इतना नॉलेज नहीं ग्राउंड गेम वगैरह वगैरह। सो मैं उतनी नॉलेज लर्न कर सकता हूँ, मैं उतना ही लर्न किया, मैं बहुत लर्न किया। मैं हमेशा मैं ओपोनेंट के हिसाब से मैं कभी फाइट प्लान नहीं किया। मैं ये ओपोनेंट वो स्ट्राइकर है, ये ऐसे किया, वो नहीं किया मैं हमेशा, क्योंकि वो हम लोग पता नहीं था पहले पिछले वाला फाइट में कुछ कर सकते वो लोग, और अपना फाइट प्लान चेंज करके नेक्स्ट वाला फाइट में कुछ ना कुछ कर सकते। सो हम लोग कर आई मीन लाइक देख नहीं सकते ना, जस्ट नहीं कर सकते ना। सो हमेशा मैं स्ट्राइकिंग या ग्राउंड गेम दोनों में बहुत एक लेवल में मैं खतरनाक ट्रेनिंग करके मैं जाती हूँ। लाइक एक ग्राउंड में आराम से धीरे धीरे से मैंने मेंटेन करने की कोशिश की मैं हमेशा। और उसके बाद एक ग्राउंड के बाद मुझे पता चल जाएगा लाइक माय मेरा ओपोनेंट को कैसे में फाइट करना है, या स्ट्राइकिंग में फाइट करना है, नहीं तो मैं ग्राउंड पे लेके फाइट करना है। फॉर एग्जांपल मैं लास्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप गया था सेमीफाइनल मैच में, लाइक I am a striker, but my opponent was striker, very good striker. She was very fast and very speed. So मेरा first round पे actually She was first from round which country? I'm She was from which country? she was Semi-final? Kyrgyzstan actually. Okay, okay. अच्छा. Yeah, so she was very good actually. So पहले मैं थोड़ा स्ट्राइकर में जाने का ट्राई किया था मैं बहुत ज्यादा, और मेरा एक दो पंच लगा, उसको बार बार आने लगे, ऐसा करके एकदम मुझे को शौक हो गया। लाइक मैंने स्ट्राइकिंग नहीं चल रहा है उसके ऊपर, मैं क्या करूं, मैंने गेम प्लान चेंज किया। लाइक Yeah, माय okay. माय कोच एंड मेरा एक Yeah. फ्रेंड है दिनेश, उन्होंने मुझे प्लान किया था हाँ. आई हैव टू गो टेक डाउन, अदरवाइज आई फर्स्ट राउंड ऑलरेडी उसका विन हो चुका है। सो आई हैव टू चेंज माय प्लान। सो ऐसा अकॉर्डिंगली मैं फाइट जाके, जैसे मैं देखो दोनों मैंने तैयारी करके आया था, इसलिए एक काम नहीं कर सकते तो दूसरा ट्राई करना पड़ता। ऐसा करके हमेशा मैं दो लेवल में काम करके जाता हूँ ऐसा करके। True, true, yeah. I mean, that's what I mean. You have to be good in everything, right? Great, yeah. Now, talking about your training, like like you already mentioned, you have a very good training support system, be it your sparring partners, trainers, जो भी है. You're currently training at Koi Combat Academy, Bangalore, right? Yeah. Yes, yes, तो yes. थोड़ा बताओ आपका training schedule and how is that you do all your sparring training? How does a typical day pan out for you? Yeah, actually our training morning and evening करते हैं, but actually normal जिम में morning ऐसे से करता था, but हमारा तो स्टार्ट करते ही 10:30 से, क्योंकि एक्चुअली हमारा जिम का सारा मेंबर तो अपना अपना अलग पर्सनल ट्रेनिंग लेता है। इसकी वजह से हम लोग डिस्कस करके गोल्स डिस्कस करके हम लोग अपना अपना फ्री टाइम पे लाइक ऑलरेडी ट्रेन दे के आए वापस आके हम लोग कब एक ही साथ ट्रेनिंग कर सको ऐसा करके।
और 10:30 में स्टार्ट किया, 10:30 तो मॉर्निंग का till 1:30 तक हम लोग ट्रेनिंग किया था, लाइक separate डे का, लाइक मंडे ट्यूसडे स्ट्राइकिंग मॉर्निंग पे, इवनिंग में बीजेजे ऐसा करके, और वेडनेसडे में कुछ बीजेजे ड्रिल मॉर्निंग पे और रेसलिंग ड्रिल इन इवनिंग, और थर्सडे भी स्पारिंग और इवनिंग में रेस ऐसा करके, और फ्राइडे में ऐसा कुछ अलग अलग शेड्यूल है रेसलिंग का, ऐसे करके हम लोग, मेरा मेरा टीम का एक सीनियर है ट्रिबुन भैया एंड आशुतोष मेरा फ्रेंड है, और कोच वगैरह, वो लोग मिलके प्लान बनाते हैं उसके हिसाब से, और अकॉर्डिंगली, और इवनिंग में हम लोग 7:30 से स्टार्ट करते हैं, 7:30 टू टिल 10 o'clock ऑलमोस्ट, या वहां तक ट्रेनिंग करते हैं ऐसा करके। अच्छा है हम लोग अपना एक, हम लोग का टीम में एक्चुअली वेरी गुड टीम, एक्चुअली आई एम सो लकी टू हैव दिस टीम, लाइक नॉट कोच हम लोग का बहुत हेल्प करते हैं, नॉट ओनली फॉर कोच, लाइक हम लोग फ्रेंड सर्कल है, लाइक जूनियर या सीनियर डजंट मैटर, हम लोग एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं, लाइक मेरा कुछ मिस्टेक करो, शुरू दिस इज रॉन्ग, लाइक दिस ऐसे करके वो लोग बताते रहते हैं, और एवरी हम लोग लाइक हम लोग एक मेरा फाइट आ रहा है एक साथ सपोर्ट करके मुझे को बहुत पुश करते हैं, सेम लाइक किसी और का फाइट आ गया, हम लोग एक साथ उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसे करके एक एक प्लान करते हैं, बहुत वेरी गुड टीम एक्चुअली। Great. So, I mean, you're so lucky to have such a team, right? That's so important because Yes, more support system, Rena, so very important. Yeah, true. yeah. Now, talking about your next level, I mean, I'm sure I don't know, I mean, maybe you'd also be looking to turn into a professional fighter now. कैसा मतलब, what is your plan? UFC, one championship, मतलब, how is like, what is the next goal? Long term goal maybe, short term, long term, जो भी है. Actually, I really like UFC. This is what's my dream actually. This is my dream. मुझे को एक बार मुझे को UFC मुझे को प्लेटफॉर्म फाइट करनी है मुझे. This is my dream actually. Yeah, मैं मिलने की बहुत कोशिश करूंगा. I will try my best. And अभी फिलहाल के लिए मुझे को अभी प्रो जाने का टाइम आ गया एक्चुअली. लाइक मुझे एमेच्योर में मैंने काफी में नॉलेज क्या बोलते हैं लर्न कर लिया मैंने काफी नॉलेज. तो काफी मिल गया, मेरा भी हेल्प हो गया था. सो नेक्स्ट लेवल इज लाइक हमारा म्यूट हो गया था. म्यूट हो गया था. या No सो problem. नेक्स्ट इंडियन का प्रमोशन भी है मैट्रिक्स फाइट नेट का. सो मुझे को चांस मिलेगा तो मैट्रिक्स फाइट नेट पे फाइट मिल गया तो बहुत लकी है मेरे लिए. सो नेक्स्ट आई विल try to matrix fight night and next one like this. Okay, I will go step by step like this. Sure. Yeah, I mean, of course, that's how you climb ladder, right? मतलब then ladder में अलग-अलग steps रहते हैं. That's how you climb ladder. So yeah, so UFC is your, I mean, of course, Matrix is what you're looking at, Matrix Night, MFN, Matrix Fight Night, and then maybe UFC is what you're looking at, right? Yeah, that's the way to go. I mean, now we will go to a few rapid fire round. So उसमें आपको कुछ questions पूछेंगे. Are you ready? Yes. Sure. What is your favorite Manipuri food? Because I know you're away from home, but still there are certain food that I'm sure you'll be missing. What is your favorite Manipuri food that comes to your mind? Yeah. First thing that and then of course maybe you're missing here in Bangalore as well. That's ये क्वेश्चन आपने पूछा है लेकिन सारा का सारा तो फुट आ गया मेरे सामने. अभी कौन सा चूज करना है? एक्चुअली मुझे एक दो पसंद है, लाइक एक इरोम्बा एंड एक चिकन. या डिफरेंट टाइप का बनाते हैं. So okay, so how's the first preparation you said? What is the first preparation you said? That was iromba actually, like a vegetable mix and some type of fragmentation face. Okay, that mix. Some mix. Oh, great. Yeah. And thing that you most miss here in Bangalore, you're away from your hometown, Manipur. What is the thing that you most miss?
it might be your parents, I mean whatever, you know. या बैंगलोर में मैं बहुत मिस करता हूँ कहीं लाइक हमेशा घर पे खाना खाते था या लाइक सैटरडे संडे संडे वो दोनों बहुत मिस करता है घर को क्योंकि यहाँ पे तुम्हें अकेले रहना पड़ता है घर पे तो फैमिली के साथ बातचीत कर दो खाना खाओ फैमिली के साथ लाइक यू नो एंड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है लाइक मेनली मैं मिस करता हूँ सैटरडे संडे मोस्टली लाइक थोड़ा फ्री है ना उस टाइम तो बाकी टाइम तो बहुत रश था उसकी वजह से इसलिए मुझे इतना भी नहीं था बट ओनली खाना खाने के टाइम एंड फ्री खाना टाइम खाने गया है सैटरडे संडे या एक साथ आप लोग खाना खाते हो मतलब एक ही डाइनिंग टेबल ना. Okay, so the next question is, Surbala, of course, you are a ethical, what do you say, MMA artist. You don't pick a fight just like that, right? लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है that fighter in you comes out, you know, when you have to protect yourself or maybe protect in your friends. ऐसा कभी हुआ है street fight वगैरह कि you had, you know, you really had to defend yourself or somebody else कि you know that fighter in you came out और आपने मतलब किसी को मार दिया. ऐसा हुआ है कभी that you remember or came close to fighting? ऐसा कुछ हुआ है? एक्चुअली नहीं 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 हुआ एक्चुअली ऐसा कभी या नहीं नहीं एक्चुअली नहीं हुआ बट हम लोग मणिपुर में थोड़ा एक होली के टाइम था हम लोग रात को कभी कभी हम लोग फैमिली के साथ हम लोग बाहर जाते लाइक लाइक म्यूजिक देखने या वगैरह वगैरह और उस टाइम थोड़ा हम लोग हम लोग छोटा बहन लोग थोड़ा ऐसे करते तो बातचीत तो थोड़ा सा हो जाते हैं एकदम थोड़ा 100% के साथ बट इतना स्ट्रीट फाइट कुछ कभी नहीं हुआ. Okay, sure, yeah. Your favorite sparring partner? My oh yeah in our gym ना हाँ सब लोग पसंद है कोई yeah You can't be biased also. sorry You can't be biased also. नहीं तो किसी और को बुरा लग जाएगा. True. Not only actually that, like सब अच्छा है क्योंकि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आदमी पीपल है इसलिए देखो हमारे लिए बहुत अच्छा मैटर करते लाइक उनके साथ थोड़ा एक्सप्लोसिवली खेलना उनके साथ थोड़ा काम खेलना और उनके साथ थोड़ा ज्यादा पावर यूज करना कंट्रोल करना ऐसे से वो सिचुएशन अलग अलग रहता ना सब अच्छा है. True, yeah. Your favorite MMA athlete? Mine is Israel edition, yeah. Oh, Israel, okay, kickboxing. Yeah. So what do you Very think good about actually. So what do you think about his fight against Alex Pereira? His next fight, title fight. He will beat, yeah, I know. Yeah. Actually, Israel इसने वो उनका स्ट्राइकिंग बहुत टेक्निकल बहुत कैलकुलेट था लाइक हमेशा एक फाइट करते लाइक कभी वेस्ट किक कभी वेस्ट पंच नहीं खोलते वेरी कैलकुलेट करके खोलते एकदम मस्त मस्त लाइक मुझे बहुत पसंद था और एक या आई लाइक और लड़की वेलेंटिना उन दोनों बहुत पसंद है मुझे. Oh, Valentina. Okay, yeah. Israel is very calculative fighter ना मतलब he keeps a distance जिसके साथ distance रखना है रखेंगे उसके बाद मतलब उनका fighting IQ is very high I guess right मतलब very high yeah अभी वेस्ट नहीं होते उसका कार्डियो भी और लाइक पंच के हम लोग फाइट करते हैं ऐसा लाइक कभी कभी मिस हो जाते हैं लाइक पंच में एक मिनिमम 4-5 पंच खोल दो 1-2 पंच लेन हो जाते हैं लेकिन उनका एकदम 1-2-3 खोलो लेन लेन ऐसे हो गए एकदम right मतलब his striking accuracy is also very high right high rate of मतलब punching accuracy kick accuracy and okay your now talking about BJJ which is your favorite submission technique? Actually, mine is armbar. Yeah, पहले हम लोग UFC fighter Ronda Rousey. Yeah. तो आर्मबार कर लेने का तरीका इतना फैंसी इतना कभी भी कहीं भी लेके जाते हो फाइट में नीचे आ जाओ एकदम कहीं से भी आगे सबमिट करते हैं आर्मबार. I really like armbar. Yeah, armbar. Okay. Sure. Yeah. फाइटर हो तो आपको मे भी एक्शन मूवी से पसंद रहेगा which is your favorite action movie? Which is your favorite action movie or do you I mean
ऐसा कुछ है? एक्शन मूवी हाँ पसंद है लाइक थोड़ा लास्ट टाइम मैंने एक वहाँ देखा था तब तो गेम ऑफ थ्रोन का लास्ट पार्ट वो Okay, अच्छा okay. लगा मुझे लाइक यू नो थोड़ा अच्छा लगा मुझे Oh, great, great, great. Favorite actor, actress, movies? फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस उसको बोलो मुझे समझ नहीं आता मैं बॉलीवुड में बताती हूँ मैं हाँ हाँ आपको हाँ हाँ. या लड़का में मतलब मेन में अक्षय कुमार बहुत पसंद है अच्छा, oh, और because he's also a kind of a well, a black belt and all. actually yeah he is very nice Yeah, actually yeah yeah. I like yeah और लड़की में कैटरीना कैफ Acha, oh, great, great. Sure, sure, yeah. And where do you see yourself in the next 5 years as a fighter in your fighting journey, basically? Next 5 years, ka, matlab, where do you see yourself? next 5 years का yeah I will on we'll see on UFC so not UFC 170 first yeah Yeah, one okay, okay. So you want to even though UFC, like you said, is your ultimate goal, but you are actually yeah thinking I of, will yeah, yeah. But I know yeah मेरा अभी अभी मेरा का लेवल है अभी मुझे mm-hmm, का अभी मैं जनरली सच बता रहा हूँ मैं mm, अभी यूएफसी का लेवल पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे अभी मैं okay, हाँ मैं मन में तो मैं एक्चुअली मैं खोल के बोल सकता हूँ मैं आई विल बी इन मैं फाइट करूंगी यूएफसी में से करके बट अंदर से मैं पता है मुझे क्योंकि मेरा अभी यूएफसी जाने का लेवल थोड़ा डाउन है अभी अभी मुझे को थोड़ा और गेम इम्प्रूव करनी है मुझे थोड़ा yeah, और इम्प्रूव करनी है यूएफसी जाने के लिए मुझे और थोड़ा प्रो फाइट में मुझे फाइट थोड़ा खेलना शुरू करेगा मुझे धीरे धीरे मुझे थोड़ा मेरा लेवल अप करने के लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं about time लाइक भी चाहिए ना, about time भी चाहिए, professional थोड़ा about सा time, yeah, yeah. देखो पहले एमएफएन वन ऐसा उन दोनों की एमएफएन नहीं तो वन उन दोनों की मुझे पहले मैं ट्राई कर लूंगा उन दोनों के पहले ही मिलने वाला उन दोनों की चांस मिलेगी मुझे वो जाऊंगा उसके बाद मुझे यूएफसी के अटेम्प्ट कर लूंगा Sure, sure, sure. Ek, if you don't mind, just can you show your favorite boxing combination? I mean, Oh, yeah. Boom. wow, left hook. Great, great, great. Sure, sure. I mean, seriously, Surbala, it was great having you in my show because you are an inspiration, right? Because to be the first gold medalist in such a prestigious tournament like Gamma, and you are an inspiration for the other fighters also because MMA as we all know, MMA as a sport is coming up in India, right? We have got Yes, great yes. boxers, great wrestlers. Matlab, individual sports mein we already there. Like when it comes to MMA, mixed martial arts, we are coming up. Of course, we have got fighters like Arjun Singh Gular and Ritu Pogart. Uh, but we are evolving as a nation, and it's fighters like you who fight with a broken jaw, whose jaw plate shifted from one side to the other, and then win the gold medal in the final bout. That shows what kind of fighter you are, right? It's all here, not only about the physical strength, but it's also so much here, right? So keep on inspiring all of us, and we are all with you. Wins and losses are all part of life, and no matter what, we are all with you. And you have already inspired so many of us, and you're only going to inspire more and more. Thank you so much, Surbala, and we really Thank you wish so you, much. yeah, all My the very pleasure. best. Yeah, and but one very special request from my side, for my own selfish request, maybe is that if you can allow me to just come to your gym and see as to how you all sweat it out, you all guys, it's not a joke, right? To be fighting day in and day out in the gym. So आप एक बार मेरे को कोई combat sport में एक बार if you allow me to just come there and just see as to how you all guys train and stuff like that. Personal request. Yeah, please come to train Dave and train together. Sure, 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 sure. और हाँ या और कभी कभी मैं भी ऐसा Hmm. करूंगा हमारा जिम ट्रेनिंग टाइम में Hmm. भी लाइव वगैरह और वीडियो भी अपलोड करते रहूंगा Sure, 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 sure. Yeah, yeah, why not? Yeah. Thank you so much, Survala, and all the very best for your future. And yeah, keep on fighting and keep on fighting hard. And we're all with you. Let's go. Thank you so much, Survala. Thank you. Thanks. Thanks. And Thanks. that's all you and everyone. Yeah. Yeah. Thanks. Thanks, Survala. Thanks. Bye. Take care. Bye. Bye.